As we all say, traveling is the most intense part of learning. Nubra Valley is a remote yet never segregated place which catches enthusiasm of tourists and also the trekking community all over the world. Like other places of Ladakh, Nubra is a high desert with a lack of vegetation except for river banks. The old Silk Route goes through this valley. Dry land and high mountains through the sparkling river are difficult to discover somewhere else. Nobody would have speculated that sand dunes could exist at such a stature height. While you are visiting Nubra Valley, marvelous Hunder sand dunes must not miss. It is the northernmost part of Jammu and Kashmir, which is situated 150 km from Leh. Nubra Valley is known as the Orchard of Ladakh and was initially called Lumra, which implied the Valley of Flowers. Encompassed by the snow-capped Himalayas, Nubra Valley lies amongst Tibet and Kashmir. Pleasant and amazing scenery makes it heaven for the nature lover. Amid winter, the entire valley looks like the scene of moon, and in summer loaded with greenery. It's known for its orchids, scenic vistas, Bactrian camels which attracts the visitors. Very good morning and namaste to all my viewers. What a place, what a place. The piece of earth can offer you a small piece of earth, pardon me, a small piece of earth can offer you so much of variety. If you come to this particular terrain in Ladakh, where the bacterial camel are at its best, wow, look at the flight here. I think this is going to Siachen probably. So you can see there's a flight that is taking a wild ride towards Siachen. Wow, it's looking very pretty, and I mean, it's hard to imagine our security forces working in such a terrain. Once you are here, you realize how difficult it is. Security forces protecting our borders. अब्दुल, कहाँ के रहने वाले हो? लोकल? और ये इसके खाना पीना क्या कराते हो जनरली? झाड़ियों में खाते हैं। झाड़ियों में? बूसेस वगैरह? पत्ती? और उम्र क्या होगा इन दोनों का? ये होगा सर 8 साल का। 8 साल का? और उसका? एक मिनट। दूसरे वाले का भैया? दूसरे वाले का 10 साल। 10 साल। और कितने साल जीते हैं ये लोग? 25 साल। क्या नाम तो कुछ दिए होंगे? नाम नहीं है? सिर्फ वोट है। क्यूट है ना? Diskit village bus stop, right now. And it's quite a cute bus stand. I mean, in the middle of the mountains. Namaste ji to everyone all over the world, in our country. I hope all of you are doing fantastic. I'm going to a small cafe. We just stopped in Diskit after having a exciting time in Hunder, and we just saw this, that this banner here, Sode Cafe.
So this kind of attracted us, you know, because the picture is quite, you know, attracting, because we are hungry and we want some food. So let's go to, you know, Sode Cafe. I'm gonna show you the cafe, how's the food in Diskit. I hope you'll enjoy. कोलकाता में गए हैं। Oh wow, कोलकाता गए। एथलेटिक है। Wow. It's inspiring, ना? अभी 2 महीने आपका खोला है ना? आपका नाम क्या है मैम? रिंजिंग। अच्छा। तो आप यहीं पे रहते हो, विंटर में यहीं पे रहते हो? अच्छा, और गांव आप यहीं गांव डिस्किट में? अच्छा। एंड व्हाट अबाउट योर फैमिली? हाउ मेनी पीपल हु आर देयर? दादा दीदी। पापा मम्मी। यू आर द आप अकेली हो? आपके भाई हैं? मैं यहाँ शादी करके आया ना। अच्छा, यू आर मैरिड हियर। कम होगी ना यार। कोरोना के बाद से तो फिर कैसे मैनेज कर रहे हो फैमिली? यहाँ पे एक खेती चलता है और एक कारपेंटर का दुकान है। हाँ, कारपेंटर का दुकान है। कारपेंटर का दुकान। हाँ। अच्छा। वहाँ पे मिस्त्री जम्मू साइड से आए। अच्छा। तो मैनेज कैसे कर रहे थे कोरोना यहाँ के तो टाइम? खेती ज़्यादा करते हैं। खेती ज़्यादा करते हैं तो गेहूँ वाला? गेहूँ, सब्जी भी होता है? हाँ, सब्जी। क्या होता है सब्जी में? सब्जी तो सब कुछ होता है यहाँ पे। Diskit is not only famous for its beautiful monastery. That small cafe was a savior for all of us. We left Hunder without having breakfast, and we were desperately looking for some food. And Rinzing, I mean, that lady prepared some amazing food for us. After spending some time in that small Diskit bus stop, we decided to move towards Siachen base camp. And before that, I thought, let's have a chat with the shop owner. She was amazing with us. I mean, she gave some vital information which played a huge role for all of us. And the conversation I had with her was amazing. रिक्जी अम्मो। अच्छा, अब ये दुकान कब से चला रहे हो? दुकान सीजन में थोड़ा ठीक चल रहा है। अच्छा, मतलब कितना पुराना है दुकान? ये तो 5-6 साल की। 5-6 साल। अच्छा, ये गांव के बारे में थोड़ा आप बताएंगे? ये दीक्षित गांव कैसा है? गांव के बारे में मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, आप कौन से गांव से हो? मैं हुंडर पहाड़ी गांव से। गुंदर? अच्छा। हुंडर से आगे जाके। अच्छा, थोड़ा सा आगे जाके। हाँ। तो रोज अप डाउन करते हो आप वहाँ से? यहाँ रहते हैं हम। आप यहीं रहते हो? अच्छा। तो यहाँ पे तो गांव कहाँ है? दूर में वही जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, मतलब वही हुंडर के आसपास? हुंडर से आसपास सब दूर जाके और 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। तो कितने लोग रहते हैं मान लो आप गांव में? मतलब आबादी कैसा होगा यहाँ हुंडर में? हुंडर में तो हमारे गांव में, हाँ, आपके हमारे गांव में कितना 19-20 घर है। 19-20 घर। तो हर घर में मतलब 3-4 लोग तो रहेंगे। हाँ, तो मतलब 3-4, किसी के दो ज्यादा बच्चे लोग इधर उधर कमाई, कोई पढ़ने के लिए, कोई काम के लिए चलना पड़ता है। माँ बाप रहते हैं ज्यादा। तो पूरे लोग तो घर में रह जाते हैं। हाँ। और यंगर जनरेशन आपका काम के लिए बाहर चले जा रहे हैं। काम के लिए चले जा रहे हैं। बच्चे लोग पढ़ने के लिए। आप अकेले ही चलाते हो दुकान? और कोई है फिर? पति है। क्या बोलते हैं? गुस्तर? दसमोचे में आपका क्या, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब किस लिए वो करते हो आप लोग? एंजॉय साल में एक बार जरूर होता है। साल में एक बार होता है। पहले तो नवंबर
दिसंबर ठंडे में होते हैं। फिर चेंज किया ना, आरएस लोग घूमने के लिए आते हैं उसका तो फिर अक्टूबर में डेट चेंज किया। अच्छा, चेंज किया फिर अभी अक्टूबर अभी में। अक्टूबर। अच्छा, तो उसमें क्या होता है मतलब जैसे आप लोग जी लोग ऐसे देते हैं ना, क्या बोलते हैं, बाप बोलते हैं, छम। अच्छा, छम जो छम। छम, हाँ हाँ छम। वो पहन के अलग अलग पहन के जैसे थोड़ा नाचने जैसा, नाच तो नहीं रहना। हाँ 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 हाँ। उसी तरह। अच्छा, मतलब बहुत किस्म के वो बहुत आइटम के होते हैं, अलग अलग पहन के आते हैं। अच्छा, तो सब मतलब जैसे घर में सब आप लोग छम पहन के सब जाते हो वहाँ पे? उधर अपना ड्रेस पहन के उधर जाते हैं। अच्छा, आपका मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा ये जब बनेगा ना। हाँ, आप सब मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब आप देखते हो? हाँ, यूट्यूब देखते हो ना, यूट्यूब में आएगा ये। व्हाट्सअप नंबर आप दे दो, मैं आपको भेज दूंगा लिंक, आपका इंटरव्यू आ जाएगा। अच्छा, आप दिखाना अपने बच्चे को, दे विल बी आल्सो हैप्पी। मामा हिंदी ठीक से नहीं आते। नो वो कोई मैटर नहीं है। हम लोग जो बात कर रहे थे ना, वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज। आप बोल रहे थे कि आपका हिंदी अच्छी नहीं है। हाँ। नहीं, एक्चुअली मेरा मानना है कि लैंग्वेज तो बहुत है हमारे देश में ना। हाँ, लेकिन लैंग्वेज बड़ा बात नहीं है। इंसान को मतलब दिल से दिल का जो रिश्ता होता है ना, प्यार होता है आपस में ना, तो उसमें लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि आप भाषा पर आता भी नहीं हो, लेकिन फिर भी आप अपना भाषा बोल रहे हो, मैं अपना भाषा बोल रहा हूँ, फिर भी समझ में आ जाता है। जी, मतलब उसके लिए बोल रहा था कि आप उसके लिए कभी ऐसा ना फील करना कि आपको हिंदी नहीं अच्छा आता है। लेकिन आपकी जगह बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ा टफ है। विंटर में आप लोग क्या ऐसे रहते हो? पूरा तो बर्फ गिरा रहता है यहाँ पे तो। इधर तो पूरा पहाड़ी में गिरता है। पहाड़ी में कम गिरता है, कभी। मामा, you got apple? You plucked apple?